and welcome to my channel Growing with Nemit. My name is Neha and in today's video we are going to do a room makeover. We are going to convert our study into a kid's room, but this is not going to be his bedroom because he still co-sleeps with us. This is just going to be his study plus playroom. Okay, one more thing, that this is going to be a low budget makeover. हमने डिसाइड किया है कि हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे because this is a rented place that we can't do much here, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं that we cannot change at all. तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि रूम पहले कैसा दिखता था. इस मैट्रेस को इसमें लगाने से इसका जो हाइट है वो यहाँ तक रहता है और ये बीच में आता है. इसे हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो हमें इसकी हाइट को एलिवेट करना है और इसके बराबर या थोड़ा ऊपर लेके आना है. लेट्स सी वो कैसे होता है. तो अभी हमारा ये वाला जो आइडिया है ये फेल हो गया है क्योंकि ये जो एजेस हैं इतने कंफर्टेबल नहीं है. सोफ़े के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए था. अभी हम एक दूसरा मेथड ट्राई कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ओपन दिस होल रेक्टेंगुलर पार्ट और इसे हम लो सीटिंग काउच या लो सीटिंग सोफ़ा टाइप हम बना सकते हैं. अभी फाइनली हमने ये सेटअप किया है सिटिंग के लिए एंड इट इज़ लुकिंग परफेक्ट.
like, comment, share, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. See you next time. Bye bye.